My dear students, today I want to start a new chapter of the syllabus, and this chapter is trigonometry. In this chapter I want to discuss about the trigonometrical ratios. What are the trigonometrical ratios? And I have already sent you the revised syllabus and deleted syllabus. So I want to recall about the syllabus, what you have to learn in this chapter. According to the book of NCERT, you have to learn exercise 8.1, exercise 8.2, exercise 8.1 and 8.2. But you have not learned trigonometric ratio of complementary angles, that is exercise 8.3. But you should have the ideas about the complementary angles. But according to the syllabus, deleted syllabus, you have to not learn about complementary angles, and problems based on complementary angle will be not asked in the board examination. So exercise 8.3 is deleted. Now exercise you have to study exercise 8.4. So there are 4 exercises in trigonometry in which exercise 8.3 is deleted. So keep in your mind. So keeping all these points in view, I want to discuss how will you solve the problem of exercise 8.1. So before starting the solution of exercise 8.1, we want to discuss about the trigonometrical ratios. So come to the point. I just told you that in a right angle triangle ABC, you know that in a right angle triangle there are 2 acute angles and 1 right angles. So in a right angle triangle ABC, suppose ABC is a right angle triangle, and it has 2 acute angles, that is angle ACB and angle BAC. Consider angle ACB is equal to theta. So in a right angle triangle, with respect to any acute angle, we can form only 6 trigonometrical ratios without repeating the sides of the trigonometrical ratio. That's why we have 6 trigonometrical ratios. A very important question and very intelligent question will be a question arises here. Why there are 6 trigonometrical ratios? Why not 5? Why not 4? Why not 7? Why not 8? What will be your answer? My dear student, try to understand. In a right angle triangle, with respect to any acute angle, we can form maximum 6 ratios without repeating the sides of the ratios. फिर से इस बात को ध्यान से सुन लो, ये किताब में नहीं मिलेगा जब तक कोई टीचर इसको नहीं समझाएंगे। इस बात की जानकारी टीचर जब इंटरव्यू में आते हैं पढ़ाने के लिए तो वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव यू एम्फेसिस ऑन दिस कंसेप्ट कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम 6 रेशियोज बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटिंग द साइड्स ऑफ द रेशियो. सी, इफ सी इज एक्यूट एंगल एंड सपोज इट इज थीटा, देन द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, that is AB by AC. How will you consider perpendicular? The angle opposite to the sides of an acute angle is perpendicular in a right angle triangle. Not any triangle, in a right angle triangle. The side opposite to acute angle is known as perpendicular.
and side opposite to right angle is known as hypotenuse, and rest is base. So for this angle theta, AB is perpendicular and AC is hypotenuse. So ratio of perpendicular by hypotenuse in a right angle triangle with respect to acute angle is known as sin theta. How will you read? Sin of angle theta. फिर समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं. नाउ व्हाट इज कॉस थीटा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to any acute angle, the ratio of the side base by hypotenuse. For this angle theta, base is BC and hypotenuse is fixed. So cos theta is the ratio of base by hypotenuse. Now what will be the perpendicular by base? Ratio of perpendicular by base? Tan theta. And tan theta is also ratio of sin theta by cos theta. ये भी याद रखो. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ऑल्सो रेशियो ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इज नोन एज कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, you must know about the ratios of trigonometrical function. So now sec theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta, that is AC by BC, that is hypotenuse by base. So sec theta is what? Reciprocal of cos theta. And cosec theta is hypotenuse by perpendicular, and it is reciprocal of sin theta. So my dear student, you must remember all the trigonometrical ratio. फिर से मैं बार बार आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि ये चैप्टर अब आज से मैंने प्रारंभ कर दिया. आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस राइट एंगल ट्रायंगल में किस साइड का रेशियो है इसके बारे में आप जानकारी हासिल करो. बार बार पढ़ो, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और अपने स्टडी रूम में इसको लिख के भी लटका दो कैलेंडर जैसा. बार बार ध्यान रखो, यदि ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रहेगा तो इमेज भी फिक्स्ड रहेगा. बार बार देखोगे, इससे बहुत जल्दी पिकअप कर जाओगे. नाउ आई वांट टू हियर गिव यू सम रिमार्क्स ऑन दिस trigonometrical ratio. Whenever you will see the ratio of sin theta and cos theta, what do you observe? Hypotenuse is the longest side, so the value of sin theta and cos theta is less than 1, and in a particular situation it will be also 1. So maximum value of sin theta is 1 and minimum is 1, and it lies between -1 and 1. Minimum is -1, maximum is 1, so it lies between -1 and 1. 10वीं क्लास में केवल इसका मैक्सिमम वैल्यू ही जानो, और 11 में जब इससे हायर में जाओगे तो मिनिमम वैल्यू भी जानोगे, ये -1. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़माना है, इसलिए पूछा सकता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 1. कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1. लेकिन मिनिमम भी जान लो तो ठीक है. साइन थीटा भी का भी मिनिमम वैल्यू -1 और कॉस थीटा का -1. तो इस तरह हम इस पर जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स है उसकी चर्चा की है. और एक और रिमार्क्स कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, 6 गो होता है. क्यों होता है कि विदाउट रिपीटिंग द रेशियो ऑफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल एनी एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल we can get maximum 6 ratio. That's why we get 6 trigonometrical ratio. In this way, I hope you have understood about the trigonometrical ratio and the minimum and maximum value of sin theta and cos theta. Now I want to discuss some problem based on this concept of exercise 8.1.
So my dear student, the problem number 1 is in triangle ABC, right angled at B. In triangle ABC, right angled at B. AB is equal to 24 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, not into, sin C into cos C. Sin C into cos C. My dear student, just I have explained you, sin is the ratio of perpendicular by hypotenuse. For sin A, BC is perpendicular and AC is hypotenuse. For cos A, base by hypotenuse. For cos A, AB is base and AC is hypotenuse. So now AC is equal to AB square plus BC square, because ABC is a right angle triangle. It will be 24 square plus 7 square. It will be 576 plus 49. It will be 625, and square root of 625 is 25 centimeter. So sin A is equal to 7 by 25 and cos A is equal to 24 by 25. Cos A is equal to 24 by 25. Now, second, sin C. Sin C is equal to, for this angle, sin C is equal to AB by AC, 24 by 25. Cos C is equal to BC by AC, that is 7 by 25. In this way, we can solve the problem number 1 and sub-problem number 1 and 2 of problem number 1 of NCERT book, exercise 8.1. Thank you very much.